have on the 21st of June as you sit down for the re-examination. Now, we understand that the candidates have been feeling a lot of stress. So much has happened in the story and, in the country over the matter. But here's your time to focus back. Tell yourself you have some grace period, both in terms of time and also on the paper. Moving on now, we have continuously reported on the state of maternal deaths that have taken place in Kota. Now, another deeply disturbing healthcare crisis comes from the same state, this time from Bikaner. At the PPB hospital in Bikaner, 5 women who recently gave birth are battling kidney failure. They fell seriously ill in the days after the delivery. Some had normal delivery, some delivered by cesarean. Doctors point to infection, very low platelet count and urinary complication before their condition crashed further. All 5, as we speak, are now in intensive care and on dialysis. And one more, just 20, is on the ventilator in a very critical condition. The government says it is moving. The specialist panel has been set up. A probe has been ordered, a team has been sent to Jodhpur, and the health minister has asked for detailed report. But the question every one of us is asking is that after Kota, whether this too is a case of fake or contaminated drugs. Officials say they have not established a connection just yet, but we are doing our bit to keep a very close eye on the matter. Officials insist that Bikaner is not linked to Kota, that medicine samples are being collected and tested, and the Food Safety Commissioner has said that there is no evidence so far of any drug having gone wrong. But remember, that's the case so far. Too early to say what could have happened, really. As investigations try to work out what went wrong inside the hospital, a second controversy erupted. And this one is not the one on the medicine. It is about how the men in charge of the state's health chose to respond to a crisis like this. I want to draw your attention to what the Health Minister Gajendra Singh had to say. Something that has now triggered real anger. And when you hear his sound bite, his reaction when he was asked about these deaths will trigger you as well. But let me give you a bit of a context before we go into that. He was asked in a press briefing where he was talking to several other, journalists there, whether the women had come into the hospital hale and hearty and did their condition deteriorate immediately. Now, what did the health minister say? He was just making a comment and he said, नाचते गाते हुए आई थी, कि सच में बीमार थी. Now that comment, when 5 women are already dead in Kota, 5 are battling for their life in Bikaner, angered the people, angered the local reporters as well. They pushed back. He said the hospital saved some, countless lives. He went on to show the total tally of how many lives every day are saved by that medical hospital. But out of those thousands, only 2 might have died while the rest go home fine, and nobody talks about those cases. Now that triggered people even more. The opposition now in the state has come down hard. State Congress Chief Govind Singh called the remark inhuman and gross insult to motherhood and demanded the Chief Minister remove the Health Minister from his post. The minister, on his part, is standing his ground. He says he has ordered a full inquiry and that the first glance he sees no sign of negligence and that strict action will follow in case of any lapse. But while the health infrastructure system keeps failing us every day in city after city, in state after state, politicians continue to show just inhuman behavior, insensitive behavior when it comes to stories like these. For families, the story is very different. Families are still waiting for answers. And for every woman watching, worrying about what maternal care in the state of Rajasthan has become, the comments by the minister doesn't instill any confidence. It only deepens the fear. At the moment, what do we know? That the probe is on, but the questions are now not just about accountability inside the hospital, but accountability in governance too. When the health minister raises such insensitive remarks, what hope do we have from the administration as well? Take a look at what exactly that entire conversation of Rajasthan's health minister was when asked about both these strategies in Kota and also Bikaner.
जो पेशेंट 5 पेशेंट आए थे सबके साथ लगभग हमारी जो जानकारी है जब उनकी डिलीवरी हुई उसके 2 से 4 घंटे के बाद सबकी तबीयत खराब हुई। आपने 100 लोगों की जिंदगी बचाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो गंभीर हालत में आई थी, क्या बात कर रहे हो आप? प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? 6 महीने से प्रेग्नेंट थी मेरी वाइफ। उन्होंने यहाँ पे एडमिट किया तो बीपी हाई हो रखा था। एडमिट करने के बाद इन्होंने बोला कि ऑपरेशन के द्वारा बच्चा उठाना पड़ेगा। इन्होंने सिजेरियन करके बच्चा उठवाया। फिर ऑपरेशन करने के बाद पेशाब लगना बंद हो गया सर। पेशाब लगने के बाद इन्होंने यहाँ पे पोस्ट कोविड आईसीयू में एडमिट कर दिया। यहाँ पे उन्होंने जाँच की तो फेफड़े, गुर्दे और लीवर डैमेज होने का किडनी की प्रॉब्लम बताई जा रही है सर। बोल रहे हैं डैमेज है, थोड़ी काम नहीं कर रही, कम काम कर रही है। All right, my colleague Sharath has been bringing us that report as well. Let's cut across to him to understand that. Sharath, you were there at that press briefing where you hear the health minister say very clearly कि क्या नाचते गाते हुए आए थे कि कैसे आए थे, और मैंने देखा काफ़ी गुस्से से पूरे जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ कर उन्होंने पूछा कि सर ये क्या तरीका है बात करने का लोगों के बारे में, जो पुअर लोग हैं, जो जिनके पास प्राइवेट अस्पताल में जाके महंगे इलाज कराने के पैसे नहीं हैं और जो सरकार के पास आई हैं कराने के लिए, उनके बारे में कैसे बातचीत हो रही है। तो उस समय के बाद ये पूरा, जब से ये वीडियो इनका वायरल हुआ है, क्या हेल्थ मिनिस्टर ने अपोलोजाइज किया है? हेल्थ मिनिस्टर सोनल अनरीचेबल हैं। उनके मोबाइल पे हमने बहुत फोन किए, उनके पीए फोन नहीं उठा रहे हैं, वो ऑफिस नहीं आए हैं। ये सबसे ज्यादा एब्सेंट रहने वाले हेल्थ मिनिस्टर राजस्थान में है। अब पता नहीं क्यों इन्हें कंटिन्यू किया गया है। इतने दिनों बाद ये गए थे वहां पर और जाकर ये बताने लगे कि नाम क्या है, पता क्या है और क्या बीमारी थी। तो पत्रकारों ने कहा कि आप बताओ तो सही कि ये पांचों के आप ऑपरेशन किए, ऑपरेशन करने के बाद ये किडनी फेल कर गया, आईसीयू में है, तो ये गुस्से में आ गए। लेकिन सोनल जो आगे वो जब प्रिंसिपल को बुलाते हैं वो बात आपने नहीं सुनवाई, और वो बात प्रिंसिपल क्या कहते हैं वो सुनकर आप सन्न रह जाइएगा। हेल्थ मिनिस्टर के सामने कहते हैं पीवीएम अस्पताल के प्रिंसिपल कि मुझे हटा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थान में 50 डिग्री तापमान है, महिलाएं पानी नहीं पीती हैं, डिहाइड्रेट हो जाती हैं, बीमार नहीं होंगी तो क्या होंगी? अब बताइए, क्या कोटा में डिहाइड्रेट हो गई थी महिलाएं? इससे ज्यादा तो टेम्परेचर दूसरे इलाकों में है, बाड़मेर में, चूरू में, वहां श्रीगंगानगर में तो सबसे ज्यादा 47 डिग्री तापमान है। तो क्या वहां महिलाएं डिहाइड्रेट होके बीमार हो रही है, किडनी फेल हो रहा है? तो आगे जब मंत्री ने ये बुलाया है, प्रिंसिपल साहब आप बताइए, उस बयान को सुनिए तो समझ में आएगा कि डॉक्टरों की माइंडसेट क्या है जो इलाज कर रहे हैं। और ये जो बता देते हैं, जैसे कोटा में भी इनको बता दिया गया, डॉक्टरों ने कहा कि नहीं कोई लापरवाही नहीं थी, यहाँ भी कह रहे हैं कोई लापरवाही नहीं थी। कोई लापरवाही नहीं हुई थी, अचानक से 5 महिलाओं का किडनी फेल कर जाना, कोटा में 5 की मौत हो गई, 5 की और की किडनी फेल हो गई। तो ये इन सवालों का जवाब अभी तक सरकार ने नहीं दिया है सोनल। ऑक्सीटोसिन चलो नकली था, लेकिन आप एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तो राजस्थान की जनता को बताओगे कि क्या हुआ है। अच्छा, उसके पहले नहीं हो रहे थे, उसके बाद नहीं हो रहे थे, ये 2-4-5 दिन में इंसिडेंट हुए आपके, उसके बाद खत्म हो गए, और आप मानते हो लापरवाही नहीं, ये भगवान का कोई प्रकोप था या कोई इंसिडेंस था। इन सब बातों को लेकर वहां पर गुस्सा है। गुस्से की वजह से कल प्रदर्शन भी हुआ, शाम तक वहां पर आम लोगों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन भी किया, जो स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करना चाह रहे थे। पहले भी हमने देखा है सोनल की जिस तरह से यहाँ पर आग लगी अस्पताल में और 48 घंटे तक स्वास्थ्य मंत्री अपने फार्म हाउस से खिमसर से निकले नहीं। तो इस तरह की स्थिति है राजस्थान में, जहां पर जवाबदेही नहीं है और जिसकी वजह से मनमानी अस्पतालों में हो रही है और ये घटनाएं लगातार सामने आ रही है। शरद, आपने बोला पूरी बातचीत नहीं दिखा पाया, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ अपने प्रोड्यूसर्स को, कैन वी हियर दैट बाइट वन मोर टाइम, एंड दिस टाइम मे बी हियर इट टिल द एंड वेयर ही इज सेइंग अबाउट व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ दैट हॉस्पिटल हैड टू से एज वेल। लेट्स ट्राई एंड लिसन इनटू दैट अगेन। जो पेशेंट 5 पेशेंट आए थे सबके साथ लगभग हमारी जो जानकारी है जब उनकी डिलीवरी हुई उसके 2 से 4 घंटे के बाद सबकी तबीयत खराब हुई। आपने 100 लोगों की जिंदगी बचाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो गंभीर हालत में आई थी, क्या बात कर रहे हो आप? प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? All right, we'll try and get that clip out for you to actually see what the principal had to say as well. But what has essentially happened? The minister there made a very insensitive remark. He called upon the principal to come and address the matter, and then the principal went on to make
An even more ridiculous remark saying that Rajasthan people come in dehydrated and that the reason why this has happened. Now, we're not saying what he's saying is untrue, could have been the case, but that's what hospitals are for. If you admit a patient who's dehydrated, the first thing that you do is you ensure that they get back on their hydration and then you operate. Now, so is this a case of negligence?